Hello, I am Dr. Rakesh Uke, and we will see today cough, causes, character, expectoration, differential diagnosis and treatment. कफ मीन्स खांसी. सो हमें खांसी क्यों आती है, क्या कारण हो सकते हैं खांसी आने के, और उसकी ट्रीटमेंट हम आज जानेंगे. सो कॉजेस ऑफ कफ: acute less than 3 weeks, persistent 3 to 8 weeks, chronic more than 8 weeks. Acute laryngitis, pneumonia, tracheitis, acute bronchitis, infections of respiratory tract. सो ये कुछ कारण हैं जिसमें एक्यूट कफ आ सकता है. और क्रोनिक लैरिंजाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा. पर्सिस्टेंट किसमें हो सकता है, जैसे सीओपीडी इन स्मोकर, वायरल ब्रोंकियल इन्फेक्शंस, अस्थमा, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फाइब्रोसिस. ये कुछ कारण हो सकते हैं. Mechanical irritation, smokers, foreign body, dry cough, early pulmonary tuberculosis, smoker cough, ILD, acute tracheobronchitis, AC inhibitors, chronic pharyngitis, asthma, tropical eosinophilia, psychogenic insanity or mental emotional, nocturnal cough, left ventricular failure, post nasal drip, एस्पिरेशन, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया. पेनफुल कफ, प्लूरेसी इन न्यूमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन, ट्रॉमा. ऑक्यूपेशनल कॉजेस: डस्ट न्यूमोकोनियोसिस, पोस्चरल चेंज like in lung abscess, GERD, gastroesophageal reflux disease, bronchiectasis, eating or drinking, tracheoesophageal fistula, esophageal reflux. कैरेक्टर. हम कैरेक्टर देख सकते हैं कौन से डिसीज में किस टाइप का कफ आ सकता है. क्रूपी कफ लाइक इन लैरिंजाइटिस, डिप्थेरिया. बार्किंग कफ इन इपिग्लोटाइटिस एक्यूट. harsh barking, painful with stridor in laryngitis, laryngeal tumor, loud and brassy cough in pressure on trachea by tumor, hollow, bovine, recurrent laryngeal nerve palsy, commonly due to bronchial carcinoma associated with oof in woofing cough with wheeze in bronchial asthma and COPD, chronic obstructive pulmonary disease, hemoptysis in pulmonary tuberculosis, acute bronchitis, bronchial carcinoma, bronchiectasis, mitral stenosis, DIC, anticoagulant, aspirin or other antiplatelet, and hemophilia. एक्सपेक्टोरेशन फाइंडिंग. हमें कफ में बलगम कैसे आएगा, उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस डायग्नोसिस में फिट होगा. लाइक प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन इन न्यूमोनिया, ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग अब्सेस, रस्टी स्पुटम इन न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, फ्रॉदी स्पुटम इन पल्मोनरी एडिमा, एलोइश इन न्यूमोनिया, एंड फाउल स्मेलिंग इन लंग अब्सेस. फिर कफ की डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, मतलब कफ ऐसे कितने बीमारियों में आ सकता है और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, यह हम अभी देखेंगे. कफ इन HIV, प्रोडक्टिव इन बैक्टीरियल न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टाइटिस, ड्राई कफ एंड डिस्निया, प्लूराइटिक चेस्ट पेन इन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, हेमोप्टाइसिस इन ट्यूबरकुलोसिस, thermal inhalation of cold air, especially in patients who have reactive airway and in those who are exercising may cause coughing or wheezing. Fumes inhalation, volatile chemical inhalation, tobacco, smoke, etc. Pertussis, loud inspiratory oof and mucus expectoration, upper respiratory viral infection,
irritative cough with wheezing, scratchy, sore throat, nasal congestion, sinusitis, mucus in pharynx, maxillary fullness और टेंडरनेस, पुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज, ये साइनोसाइटिस में हमें मिल सकता है। फिर माइकोप्लाज्मा ब्रोंकाइटिस, ड्राई हैकिंग कफ, टू प्रोडक्टिव fever, then bullous meningitis is rare but little specific for mycoplasma. Pneumonia present with fever, rigor, productive cough, pleuritic chest pain, dyspnea, rusty sputum in pneumococcus. Gastroesophageal reflux disease or GERD, in which we find heartburn, night cough, lung abscess, in which purulent and foul smelling sputum will be present. Congestive heart failure, in which we will have left heart failure, in which we will find dry cough, tachycardia, fine basal rales, exertional dyspnea, orthopnea, S3 gallop, and AC inhibitor, and irritative non-productive cough coincide with temporarily with the use of the drug. Means we will use AC inhibitor, then we will have this type of cough, irritating non-productive, aspiration, unilateral, wheezing, foreign body, aspiration. कफ कॉजेस हमने देख लिए हैं, अभी हम देखेंगे उसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। सो अवॉइड डस्ट, स्मोक, एलर्जेंस, कोल्ड, ड्राई कफ सिरप लाइक डेक्स्ट्रोमिथर्फैन, कोडीन, क्लोरफिनारामाइन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन वी कैन एबल टू यूज, ये हम ड्राई कफ के लिए यूज कर सकते हैं ये सिरप। प्रोडक्टिव कफ के लिए जिसमें बलगम आ रहा है उसमें गोइफेनेसिन, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल। ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटेलिन हम ये यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज, अगर हमें कोई डिसीज है पर्टिकुलर जो हमने डायग्नोस कर लिया, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे H1N1 है ना, इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया, उसके लिए कैप्सूल ओसेल्टामेविर 75 mg BD। इन एडल्ट COPD, इसमें एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg OD, O2 इनहेलेशन, नेबुलाइजेशन, ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट। स्टॉप ड्रग लाइक AC inhibitor or ARB in a dry cough which caused by AC inhibitor। अस्थमा, O2 inhalation, नेबुलाइजेशन और ब्रोंकोडायलेटर हम दे सकते हैं। न्यूमोनिया में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg OD और लियोफ्लुक्सासिन 500 to 750 mg OD। In heart failure, we will use diuretic ARNI like a sacubitril valsartan. Supportive care in gastroesophageal reflux disease, we have to stop fatty or spicy food, chocolate, tomatoes, citrus, coffee, tablet like a pantoprazole 40 mg OD, surgical fundoplication etc। तो आज हमने ये देखा है कि खांसी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और ऐसे कारणों में हम पेशेंट को कैसे पता कर सकते हैं कि ये खांसी इस पर्टिकुलर बीमारी से आई है और उसकी हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, वो आज हमने देखा। और किसी जानकारी के लिए या कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू।